Welcome, dear students. This is our sixth and last lecture on the quantum free electron theory. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे on the thermal conduction of metals as explained by the quantum free electron theory. Then we shall see how Wiedemann-Franz law is explained by quantum free electron theory, and we will finish our today's lecture with few demerits of the quantum free electron theory. So let us start. Thermal conduction कैसे होती है? Supposing we have got a metal in the form of a cylindrical bar, and supposing this end is hot, so it will have high temperature. And supposing this end is cool or cold, so it will have low temperature. So अगर हम hot end और cold end इन दो points को consider करें, we will have a temperature gradient. Temperature gradient means there is some change in temperature as we go from one point to another point in space. So we have got a temperature gradient between this hot end and cold end. And thermal conduction is governed by Fourier's law. It states that for small temperature gradients, the amount of thermal energy, that is heat energy, transmitted across unit area. So this is energy transmitted per unit area per unit time. The amount of thermal energy transmitted per unit area per unit time, this is called heat flux or thermal current density, और इसको हम J से denote करेंगे और उसके साथ हम एक subscript Q रखेंगे. So this denotes the thermal current density. Through a solid, it is observed to be proportional to the temperature gradient. So we will keep it directly proportional to the temperature gradient, but with a minus sign, because the temperature gradient will be from hot to cold. This is hot, this is cold. So अगर हम hot end से cold end की तरफ जाएं, जिसमें ये heat current flow होती है, अगर हम hot end से cold end तक temperature gradient लें, that will be negative, because यहाँ पे temperature high होगा और cold end पे temperature low होगा. So चूंकि temperature gradient in this direction is negative, that's why we keep a negative sign here. So this thermal current density equals is directly proportional to the temperature gradient. इस proportionality को हम equality में convert करेंगे, तो we use a constant of proportionality, and this constant of proportionality is called thermal conductivity of the solid. So for one-dimensional case, this gradient of temperature will be simply what is the change in temperature along either x-axis or y-axis or z-axis. So for one-dimensional case, we can write gradient equal to this much. So we get equation for thermal conductivity, thermal current density as minus k dt by dx.
here dt is the difference between temperature difference between 2 points in metal and dx is their separation. अच्छा, अगर हम यहाँ से SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी देखना चाहें, इसका SI यूनिट होगा केल्विन, दिस इज सेपरेशन, इसका SI यूनिट होगा मीटर, और इसका SI यूनिट क्या होगा, thermal current density, it is heat energy, so that means joule per unit area, so that means meter square per unit time, so second. So we will get the SI unit of this thermal conductivity as joule per meter square into second. Now इस थर्मल कंडक्टिविटी को K मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में चला जाएगा, और इस थर्मल कंडक्टिविटी डिवीजन में मीटर है वो यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा. Now 1 meter will cancel 1 power of this meter, so joule per second, that is watt, then division में रहता है meter and Kelvin. So hence the SI unit of thermal conductivity is watt per meter per Kelvin. In insulators, the heat is conducted only by phonons. तो अगर हमारे पास एक सॉलिड है in the form of insulator, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और हम इसके एक एंड को हीट अप करते हैं, तो जो हॉट एंड है वहां पे जो एटम्स हैं वो विगोरसली ऑसिलेट करना शुरू करते हैं. तो एक एंड के एटम जब विगोरसली ऑसिलेट करते हैं तो उनके नेबरिंग में जो एटम्स हैं ये उनके साथ जॉस्टलिंग करते हैं, तो दीज एटम्स आल्सो स्टार्ट ऑसिलेटिंग विगोरसली. तो इस तरह ये चेन कंटिन्यू रहती है यहां तक कि हीट एनर्जी कोल्ड एंड तक फ्लो होती है. तो इंसुलेटर्स में हीट इज कंडक्टेड ओनली बाय द लैटिस वाइब्रेशंस, दैट इज फोनॉन्स. लेकिन जो मेटल्स हैं, एक तो मेटल्स में हीट एनर्जी विल बी कंडक्टेड और कैरीड बाय फोनॉन्स बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, लेकिन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं. तो जब हॉट एंड पे इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी मिलेगी, दे कैन गो इजीली अप टू कोल्ड एंड. सो मेटल्स में हीट कंडक्शन is carried by two phenomena. Number one is phonons, by the lattice vibrations, by the vibrations of atoms, and also by the bulk movement of electrons. So for metals, the thermal conductivity of metals has got two components. One, thermal conductivity due to phonons, and two, thermal conductivity due to electrons. और metals में ये देखा गया है कि जो प्योर metals हैं, जो electronic contribution है, that is dominant at all temperatures. It is very, very large as compared to the thermal conductivity due to phonons. अलबत्ता जो impure metals हैं या जो disordered alloys हैं, उनमें ये दोनों contributions comparable होते हैं. K phonons, the thermal conductivity due to phonons is comparable to thermal conductivity due to electrons. Let us talk about pure metals. So for most metals, the thermal conductivity due to electrons is very, very large as compared to thermal conductivity due to phonons. और अगर हम एक numerical value देखना चाहें, the thermal conductivity due to electrons is some 100 times thermal conductivity due to phonon. So हमारे पास जो equation है K metals equals K phonons plus K electrons, तो इसमें हम ये K phonons जो है इसको हम neglect करेंगे. तो predominantly the thermal conductivity of metals is wholly and solely due to electrons.
Now let us see how this thermal conduction occurs. ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है. तो this is Fermi level and this is the hot end, this is the cold end, so T2 is greater than T1. T2 is greater than T1. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हॉट एंड पे हैं, दे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस. They don't travel only towards cold end, but they travel towards downwards, towards upwards, to the right side, to the left side. But एक फ्रैक्शन है जो टू द राइट साइड यानी कोल्ड एंड पे जाती है, और ये फ्रैक्शन अपने साथ एनर्जी भी ले जाती है. सो there is some energy, thermal energy conduction from hot end to cold end because of the motion of electrons from hot end towards cold end. But जो cold end पे electrons हैं, they have also got velocities, they have also got energy. So a fraction of electrons at the cold end, वो भी पहले तो वो हर किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट अ फ्रैक्शन गोज टू द हॉट एंड. सो दैट मीन्स देयर इज अ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड. और अगर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन करंट्स बराबर हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की करंट्स तो बराबर हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ जाते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है. सो देयर इज मोर एनर्जी कमिंग फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, एंड देयर इज लेस एनर्जी गोइंग फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड. So that means there is a net energy transported from hot end to cold end, and that results in a heat current. Now यहाँ पे एक question raise होता है, and it's a very good conceptual question. Do all the free electrons participate in thermal conduction? And the answer is no. बल्कि ये तो मैंने एक स्पेशल केस में क्वेश्चन पूछा है कि डू ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड थर्मल कंडक्शन. अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि डू ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड्स, एंड द आंसर इज नो. एक अगर हम मेटल्स की ही बात करें, मेटल्स हैव गॉट प्रॉपर्टीज, दे हैव गॉट थर्मल कंडक्शन, दे हैव गॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, they have got property of specific heat and many other properties. तो सारे के सारे free electrons जो हैं, they don't participate, they don't contribute to the properties of metals. ये एक important बात है सीखने लायक. Only those electrons contribute to the properties of metals which lie near Fermi surface. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी स्पेसिफिक हीट जब हमने स्टडी की, उसके लेक्चर में हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं. सो heat is not transported by all electrons, but only those electrons which lie near the Fermi levels. Because जो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल से काफी नीचे हैं, वो एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन कैंसल आउट करते हैं. अच्छा, फर्मी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
उनकी एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी कहते हैं, उन्हें हम EF से डिनोट करते हैं, और उनकी जो वेलोसिटी है we call that Fermi velocity and we denote that with VF. और इन दोनों के बीच में रिलेशन है, सिंस क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सो देयर एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक। सो एनर्जी को हम लिख सकते हैं इन द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2m into वेलोसिटी स्क्वायर, एंड हियर द वेलोसिटी, अगर एनर्जी फर्मी एनर्जी है then the velocity is Fermi velocity. हम इस पे काफी बार बात कर चुके हैं। Fermi energy is the maximum value of energy that an electron can have in a metal, and Fermi velocity is the maximum velocity that a free electron can possess in a metal. Okay, तो थर्ड सेमेस्टर में हम एक टॉपिक स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना फॉर गैसेस। तो अगर हम यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स को गैस समझें, देन द थर्मल कंडक्टिविटी इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट एज the thermal conductivity K equals 1/3 into specific heat into density of the material into average speed of, वहां पे तो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा, into मीन फ्री पाथ, यानी ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अच्छा, हम ऐसा करेंगे कि हम इस स्पेसिफिक हीट को मास डिवाइड करेंगे, तो हमें न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा हीट कैपेसिटी, बिकॉज हीट कैपेसिटी is an extensive quantity and it equals specific heat into mass. तो specific heat is intensive quantity, तो यहां से हमें specific heat के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी। इस मास को हम यहां से ले जाके लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो हमें ये हीट कैपेसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी गेट एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट एज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉलिड। उसके बाद डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो मास ऑफ द सॉलिड divided by volume into average speed into mean free path, they are as such. अच्छा, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे मास ऑफ द सॉलिड और मास ऑफ द सॉलिड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इन द नेक्स्ट स्टेप हमें हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा। सो वी विल गेट 1/3 into heat capacity per unit volume into average speed into mean free path. तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए अगर हमने एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, we have to see what is the expression for number 1 heat capacity per unit volume, then what is the expression for average speed, and what is the expression for mean free path. So हम एक एक करके इन तीनों के लिए expression derive करेंगे। In the previous lecture, we derived expression for heat capacity of electrons as 1/2 pi square n by EF kb square t. N is the total number of free electrons. EF, it is the Fermi energy. Kb, it is the Boltzmann constant.
and T, it is the temperature of the metal. तो ये हमें expression मिली in the previous lecture when we studied the heat capacity of electrons. अच्छा, we want the heat capacity of electrons per unit volume. So we have to divide this whole expression by volume. So the heat capacity per unit volume, so we will divide it by volume of the metal. अच्छा, न्यूमरेटर में है n और डिनोमिनेटर में है v. Now total number of free electrons divided by volume of the solid, this is by definition free electron density, यानी number of free electrons per unit volume, और इसको हम small case letter n से denote करते हैं. तो we will get this expression for heat capacity per unit volume. So we are done with the heat capacity per unit volume. उसके लिए हमें expression मिल गई. अच्छा, Fermi energy जो है, since we say that energy is wholly and solely kinetic, तो इसको हम equation number 1 में हमने इसको as kinetic energy define किया है. तो we will use equation number 1 here. क्योंकि इसमें Fermi energy है, तो Fermi energy की जगह हम substitute करेंगे 1/2 mvf square. So we will use equation 1 here. We will use equation 1 here. So 1/2 and 1/2 will go. So we get equation 3 as expression for heat capacity per unit volume. So we are done with heat capacity. Now let us go to the second, which is mean free path. Now mean free path is distance, और distance जो है, distance को हम लिख सकते हैं speed into time. So mean free path is a distance. So speed, the speed of electrons, that is Fermi velocity, into time. दो collisions के दरमियान इसको जो time मिलता है उसको हम relaxation time कहते हैं. तो mean free path के लिए हमें expression मिलेगी Vf into tau. Vf, it is the Fermi velocity. It is the average velocity of electrons lying near Fermi level. And tau, it is the relaxation time. कि on the average दो collisions के दरमियान इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम मिलता है रिलैक्स करने के लिए. और जो तीसरी टर्म है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द फर्मी वेलोसिटी. सो हमें तीनों क्वांटिटीज मिल गई. So we are done with all the three quantities. Equation 3 gives us heat capacity per unit volume. Equation 4 gives us the mean free path. And equation 5 gives us the average speed or the average velocity of free electrons. तो हम इन तीनों equations को we will use equation 3, equation 4, and equation 5. We will use them in equation 2. This is our equation number 2. So heat capacity per unit volume, that is here. ये substitute करेंगे. Then average speed, that is here. तो ये substitute करेंगे. Then mean free path, that is here. तो ये substitute करेंगे. So let us substitute. तो इसमें आप देखते हैं कि फर्मी वेलोसिटी इनटू फर्मी वेलोसिटी, दिस इज फर्मी वेलोसिटी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी फर्मी वेलोसिटी का स्क्वायर है. तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. तो इक्वेशन 6 गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर thermal conduction of metals due to the contribution of electrons. Now let us go to Wiedemann-Franz Law.
पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव की थी एज Ne² tau by m, और आज के लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन डिराइव की फॉर थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. तो लेट अस टेक their ratio. We will take ratio of thermal conductivity to electrical conductivity. So let us see what can be cancelled out. N and N will go. Tau and tau will go. Mass will go. So we get this much 1/3. फिर हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पाई और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इन तीनों का स्क्वायर मिलता है, तो इनको हम ब्रैकेट में रखेंगे और हमें फिर टेम्परेचर भी मिलता है. सो वी विल गेट 1/3, फिर ब्रैकेट में पाई kb/E होल स्क्वायर इनटू टेम्परेचर. तो इक्वेशन 7 gives us the expression for the ratio of electrical thermal conductivity due to electrons to thermal conductivity. Now, Wiedemann-Franz law is the expression for the ratio of thermal conductivity due to electrons to electrical conductivity as L into T, where L is the Lorentz number. तो इक्वेशन 7 भी हमें यही रेशो देता है, द रेशो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इक्वेशन 8 भी हमें यही रेशो देता है. तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं. तो अगर हम राइट हैंड साइड उसको कंपेयर करें तो वी सी कि यहाँ पे T है और यहाँ पे T है, तो बाकी जो बचा दैट शुड बी लॉरेंट्ज नंबर. सो इफ वी कंपेयर इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, we will get Lorentz number as pi² 3kb/E whole square. तो अगर हम इसमें इन सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो we get the value of Lorentz number as 2.45 into 10⁻⁻8 watt ohm per Kelvin square. We will conclude today's lecture with few merits and demerits of quantum free electron theory. Quantum free electron theory, this model was proposed by Sommerfeld in 1927, and it explains the following properties of solids successfully. Number 1, heat capacity, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा. थर्मल कंडक्टिविटी, जो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया. इसके अलावा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है. ये दो चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमने नहीं पढ़ी. अदरवाइज क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल दोज प्रॉपर्टीज सक्सेसफुली, बट इट हैज ड्रॉबैक्स आल्सो. नंबर 1, हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन मिलती है सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू Ne² tau by m, रादर सिग्मा इक्वल्स दिस क्वांटिटी. तो यहां से हमें सिग्मा प्रोपोर्शनल मिलती है टू n, द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट इट वाज कुड नॉट बी वेरीफाइड कि ये सच है या गलत है. तो दिस इज वन डेमेरिट. Another demerit is, according to the free electron theory, divalent metals and trivalent metals should be better conductors than monovalent metals. तो divalent वो metals हैं जो per atom दो free electrons कंट्रीब्यूट करते हैं मेटल को. Trivalent metals वो हैं जो per atom तीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं मेटल को. तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, दोज डाइवैलेंट मेटल्स एंड ट्राइवैलेंट मेटल्स शुड बी better conductors than monovalent metals like copper, silver, gold, etc.
but experimentally we find that those monovalent metals are better conductors than divalent and trivalent. और अगर मैं यहाँ पे जिम्नन एक बात करूं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा, उनको इंसुलेटर होने से सिर्फ एक ही चीज बचाती है, तो उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनको हम पूरे मेटल्स मानते ही नहीं है, वी कॉल देम सेमी मेटल्स और क्वासी मेटल्स, हालांकि वो डाइवैलेंट हैं। तो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट आर नॉट बेटर कंडक्टर्स देन द मोनोवैलेंट मेटल्स। हालांकि डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड इफ देयर इज लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू n, बट दिस कुड नॉट बी वेरीफाइड, जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 1 में पहले ही बात की है। दिस इज द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो मेटल्स की वेरिएशन तो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि इट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दैट डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। Since resistance or resistivity decreases with temperature for insulators, तो हम कहते हैं insulators have got negative temperature coefficient of resistivity. Same is the case with semiconductors. उनकी भी resistance or resistivity it decreases with temperature. So this also could not be explained by quantum free electron theory. इसी तरह एक फिनोमेनन है, उसको हम कहते हैं हॉल इफेक्ट। तो वहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं हॉल कोएफिशिएंट या हॉल कांस्टेंट। तो हॉल कांस्टेंट कैन हैव पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू, बट क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑलवेज प्रिडिक्ट्स नेगेटिव। Quantum free electron theory always predicts negative Hall constant, यानी कि according to quantum free electron theory, the electric current is always carried by electrons. But we have got few metals like beryllium, zinc and cadmium जिनके लिए Hall constant positive है. So that means the current is predominantly carried by holes. Holes are entities कि जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहां पे नहीं है, तो holes और the vacancies of electrons. तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका हॉल कांस्टेंट हमें पॉजिटिव मिलता है, लाइक बेरिलियम, लाइक जिंक, लाइक कैडमियम। इनके पॉजिटिव हॉल कोएफिशिएंट्स क्यों है, दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है स्पेशली फेरो मटेरियल्स की, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की, कि जब उनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होती है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटो रेजिस्टेंस। तो ये क्यों डिपेंड करती है ऑन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस कुड नॉट बी आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसी तरह हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि फर्मी सरफेस अकॉर्डिंग टू क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज स्फेरिकल, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये देखा गया कि फर्मी सरफेस इज ऑफन नॉन स्फेरिकल इन शेप, सो दिस कुड नॉट बी आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। अच्छा, जो हमें वीडेमैन-फ्रांज लॉ मिला कि k by sigma t is a constant, this is constant but only for intermediate temperatures.
only at high temperatures, room temperatures. लेकिन अगर हम intermediate temperature की बात करें और low temperature की बात करें, then this Wiedemann-Franz law does not hold good, and this property, this quantity k by sigma t, it depends on temperature. So this also could not be explained by the model. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि ये मॉडल गलत कहाँ हुआ, व्हाट, जो इतने ड्रॉबैक्स हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के, तो प्रॉब्लम कहाँ है? द प्रॉब्लम लाइज इन द फॉल्टी अजम्पशन कि एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी पोटेंशियल, it experiences zero potential when it moves freely in the metal. This is the faulty assumption. तो in fact जो potential है that keeps on changing. जैसे ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन के पास जाता है, the potential goes up, और जैसे ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में पहुंचता है तो वहां पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड क्रॉनिंग-पेनी मॉडल, विच इज बेसिकली a modification over the quantum free electron model. So we will talk about that in the